सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जॉर्डन मॉडल, जो जॉर्डन मेथड था आपका, गॉस जॉर्डन मेथड, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लगाते हैं और उसको इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ओके, सो कंसेप्ट तो वही है कि इक्विवेलेंस मैट्रिक्स हम कन्वर्ट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस लगाएंगे तो ए इटसेल्फ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई में और आई इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडेंटिटी है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। सो कंसीडरिंग द आइडेंटिटी, कंसीडर द आइडेंटिटी, ओके। और आपकी आइडेंटिटी क्या थी? आपकी आइडेंटिटी थी दैट A equivalents to I or some people known as A equal to IA. So choice is yours, आप इसे क्या लिखना चाहते हैं। दोनों ही सही माने जाते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे उसको करना चाहते हैं। सो अप टू 12th क्लास तक जो है, 12वीं क्लास तक टीचर्स या फैकल्टी ये इसको प्रेफर करते हैं। बट इफ़ यू गो बियॉन्ड द 12th क्लास से बियॉन्ड जाएंगे आप, बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक वगैरह में जाते हैं तो बेसिकली आप इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है एंड बोथ कम द कंसेप्ट फ्रॉम द इक्वलिटी। ओके, सो इसी चीज़ को बेसिकली हम इक्वलिटी कंसेप्ट कहते हैं, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स या कंसेप्ट ऑफ। So this is basically the concept of equivalence matrix. Okay, so this is the concept. So I hope you might understood. So चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। So as you know that given a problem is that given problem that A, the matrix A is 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1. So this is the given matrix. So as you know, here the row 1, row 2, row 3 and column 1, column 2, column 3. Okay, so as you know that these are the rows and these are the columns. So this will be column, these are the column and these are the row. Okay, so here the order of the matrix is 3 by 3. So equivalence to the matrix A, your identity matrix will be I 0 0 and 0 1 0 0 0 and 1. So this will be the identity matrix of same order 3 by 3. Okay, so now what we have to do, so as this tell that आपको A को I में convert करना है with the help of operations. So चलिए क्या कर सकते हैं। So first of all basically जो आपकी R2 को अगर देखिए, so हमारा टारगेट ये होता है कि फर्स्ट पोजीशन जो है एलिमेंट का वो 1 होना चाहिए। So हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, हम इनको रिप्लेस करेंगे। सो जो R1 है दैट मस्ट बी इंटरचेंज विथ R2। ओके, सो इसको जब आप इंटरचेंज करेंगे सो योर मैट्रिक्स विल बी 1 2 3 and 0 1 2 and 3 1 1. Okay, and equivalence to the this matrix that will be 0
1 0 and 1 0 0 and 0 0 1. Okay. Now the next target is to reduce these three. Okay. So for this we apply that R3 implies to R3 row 3 minus 3 times of row 1. Okay. So when you apply, so it will be so it will be 1 2 3 0 1 2 and that will be 0 minus 5 and that will be minus 8. Okay, that implies to within the identical matrix it will be 0 1 0 and 1 0 0 0 minus 3 and 1. Okay, so this will be the value. Done. Next, the diagonal of the A11 element फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि दैट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में ऑलरेडी है. सो देन आफ्टर व्हाट वी डू, देन आफ्टर वी विल मेक इट 0. ओके, सो हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 0 बना कर रहे हैं. सो फॉर दिस वन we implies that R3 plus 5 times of R2. Okay, so therefore your matrix will be, because I'm changing R3, so R1 and R2 एलिमेंट जो है वो सेम रहेंगे. Okay, and it will be 0 0 and it will be 2. Okay, so the equivalence of this one, it will be 0 1 0 1 0 0 and that will be 5, that will be minus 3 and that will be 1. Okay, then after what we will do, we will apply. Now the target is this, that we have to make the 0 in R1 also. Okay, so we will apply the property in R1, so that will be R1 implies to R1 minus 2 times of R2. Okay, so when you apply this property, so there will be a change in matrix 1, the R1, it will be 1 and 2 times it means it will be 0 and 2 times, so it will be minus times of 1. Okay, and R2 and R3 जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होंगे. सो R2 का एलिमेंट 0 1 and 2 and that will be 0, that will be again 0 and that will be again 2. Okay, and equivalence to this one we got that that will be minus of 2 1 and 0, R2 no changement and R3 also there will be no change. Okay, so that is 1. Now what we apply the next, that the A33 element जो है that must be 1 instead of 2. So for this we divide R3 with the element 2. So the property will be that R3 implies to
1 by 2 times of 1 by 2 times of R3. Okay, so if you apply this one, so it will be what it will be. So it will be that 1 0 minus 1, and that will be 0 1 2 0 0, and it will be 1, and equivalence to this the matrix will be also changes, and that will be minus 2 1 0 1 0 0, and that will be 5 by 2 minus 3 by 2, and that is 1 by 2. Okay, moreover, so if you apply this thing, so if you apply the next property, so what is the target? The target is that above this one the both element must be 0. So for this, with the help of R3, so the property will be that R1 implies to R1 plus and R2, that implies that R2 minus 2 times of R3. Okay, so the final matrix will be that 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and equivalent to this matrix will be that will be minus 2 plus 5 by 2. So minus 2 plus 5 by 2, that will be 1 by 2. Okay, and that will be minus 1 by 2, again it will be 1 by 2. Okay, moreover, if you apply this property, so that will be 1 minus 5, so that will be minus of 4. Okay, and that will be 3, and that will be minus ka 1, and in R3 there will be no change, so 5 by 2 minus 3 by 2 and 1 by 2, so that will be the value. So hence finally this A is converted, so it became I. So as you know, this is the matrix I, so equivalence to the I, that will be called A inverse. Okay, this is the concept. So hence we can say hence that A inverse will be 1 by 2 minus 1 by 2, 1 by 2 minus 4, 3 minus 1, 5 by 2 minus 3 by 2 and 1 by 2. So this is the answer. So उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स मेथड, या हायर क्लासेस में इसको हम लोग बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जो कि कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस मैट्रिक्स पे काम करता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, so as you know, in this matrix again I am repeating it, that Gauss method, Gauss Jordan method और inverse matrix of elementary operations. So concept talk मैंने पहले किया था इसमें फर्स्ट पार्ट में. So inverse of matrix of the
matrix method or elementary operations. The concept is basically the equivalence matrix पे काम करता है और इसका ये symbol होता है. So this is the symbol of the equivalence. So this thing is basically the symbol. Okay. So as you know that A is basically the given matrix, and equivalence to A, the I is the matrix of same order. So this is the unit matrix. If you applied the operations, applied the elementary operation, either row or column elementary operation, that is a basically row or column. Okay. So if we apply the operations over here, so it means this A matrix will convert into the matrix I, and I matrix will convert into the A inverse. So this is the concept. Okay. So this is the concept. Okay. This is the condition that if you make that matrix A equivalence to matrix I, so after the operation it will be. Okay. So the statement is that elementary row or column transformation which is reduced to a square matrix to the unit matrices when applied to the unit matrices and give the inverse of. So यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं. आपका क्वेश्चंस क्या है? एम्प्लॉय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. सो ए का R1 जो है रो, फर्स्ट रो जो है 0 1 2 है, R2 1 2 3 है एंड R3 जो है 3 1 1 है. सो आइडेंटिटी को हम कंसीडर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. और सिंस ये जो ए मैट्रिक्स है ये 3 by 3 ऑर्डर की है, इसलिए हमें आई मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा. फिर हम इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे. सो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं और देखिए एट लास्ट ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही बन गई वैसे उसकी इक्विवेलेंस जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स है. सो फाइनली दिस इज द आंसर. सो दिस इज योर ए इनवर्स and this is your answer. Okay, and it was your concept talk. So finally this is your answer. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.